देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के टेलीकॉम सेक्टर को GSMA, जो कि ग्लोबल टेलीकॉम की बॉडी है, उसने कल गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया है, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड है, जो कि भारत में प्रधानमंत्री जी ने जो रिफॉर्म्स किए, टेलीकॉम सेक्टर को जो टोटली ट्रांसफॉर्म किया, उसका एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है, ग्लोबल अवार्ड है। इस अवार्ड की इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि एक लंबे टाइम तक जिस तरह का टेलीकॉम सेक्टर में कंटिन्यूअस इश्यूज रहते थे, कई तरह के लिटिगेशंस थे, कई तरह की लीगेसी इश्यूज थे, वो सब अब पीछे रह गए। अब टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज सेक्टर बन के निकला है। टेलीकॉम सेक्टर अब एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड सेक्टर बना है। टेलीकॉम सेक्टर अब एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर बना है। दो तीन और छोटी छोटी बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। We had promised that 5G rollout, India will achieve 200 towns and cities and districts to be covered by 31st March in the phase 1. हम लोगों ने आपसे सबसे प्रॉमिस किया था कि फेज 1 में 5G रोल आउट बाय 31 मार्च 200 शहरों को, 200 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि फेज 1 मार्च 31 के बजाय बहुत पहले कंप्लीट हो गया। एज ऑन टुडे इंडिया हैज कवर्ड 387 डिस्ट्रिक्ट्स 5G कवरेज में। 1 लाख sites, BTSs, 1 lakh BTSs by today. So that's again a very important feature. Then the third important point I want to share with you is, which gives immense pleasure. प्रधानमंत्री जी ने हमेशा मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया और हिंदुस्तान के इंजीनियर्स को भरोसा करके नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने का जो एक मिशन रखा है देश के सामने, कल एक और उसका माइलस्टोन अचीव हुआ। फर्स्ट मेक इन इंडिया ई-नोड बी, फर्स्ट डिजाइन इन इंडिया ई-नोड बी कल चंडीगढ़ में इंस्टॉल हुआ है। तो ये तीन खबरें आपके साथ शेयर करनी थी। आप ये 2005 के बाद पहली बार रिकॉग्निशन होता। ये बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है फ्रेंड्स, GSMA अवार्ड। इसमें जो कई तरह के रिफॉर्म्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, सितंबर में किए। सितंबर के बाद, सितंबर में कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स थे। उसके बाद में स्पेक्ट्रम रिफॉर्म्स हुए, सैटेलाइट रिफॉर्म्स हुए, ROW रिफॉर्म्स हुए, which from time to time we have shared with all of you. इन सब रिफॉर्म्स का नेट आउटकम क्या है? नेट आउटकम एक तरफ से रिकॉग्निशन है, अवार्ड। एक और इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल स्पीड टेस्ट, UCLA का जो ग्लोबल स्पीड टेस्ट होता है, उसमें इंडिया की रैंक पहले थी, सितंबर में थी 118। आज कितनी है? 69। Imagine 49 positions jump within a very short period of time. Telecom tower में, as all of us know, 85% of the permissions are happening instantaneously, zero time, instantaneously, zero time. आप बटन दबाते हो और आपके सामने ऑटोमेटिकली परमिशन आ जाती है। 85%। जहां पर भी डिफेंस के पास में हो या किसी एयरपोर्ट के पास में हो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट द एवरेज इज नाउ 7 days। जो एवरेज 200 दिन से ज्यादा था, दैट एवरेज इज नाउ 7 days। सो ये सारी
कई सारी बातें थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बहुत दिन हो गए साथ में बैठ के कॉफी नहीं पी थी, तो एक बहाना मिला। 2024 के दिसंबर तक 100% कवरेज हो जाएगा। 2024 के दिसंबर तक 100% कवरेज हो जाएगा। Sir, the telecom industry has been asking, and this was a demand they repeated yesterday also, that OTT communications apps should share revenue with them. Do you think that is a fair demand? What is the government's view on? There is a global movement, there is a global discussion, lots and lots of regulatory changes are happening in the entire world, where there is a kind of new thinking in the OTT space. There is a new thinking in the OTT space all over the world. These are new changes which are happening all over the world. So let's see how the world moves. But sir, how about India? Telecom is always a global industry. Telecom is an industry where everything is benchmarked to the world. So whatever we do will be in sync with the global trends. But sir, none of the countries have done so. Many countries are thinking, many countries have not, none of the countries have done. 5G था क्या? 4 साल पहले 5G कहीं नहीं था ना? आज सब जगह 5G है. World keeps changing. I'm not commenting on anything. I'm not commenting on anything. What I'm saying is there is a new thinking on these subjects all over the world. So let's see how the entire sector pans out. Sir, as you previously said, this reforms thing will be a continuous process. Yes. So by when will you? Our next major target is getting the telecom bill passed in the coming monsoon session, and that will lead to a major series of reforms in terms of spectrum, in terms of licenses, in terms of the regulation. There will be a significant reform because of the telecom bill. As you have seen the bill, most of you have seen the first draft. That will bring about a major significant reform. Second draft is also coming. We are working on it. We are working on all the inputs that we have received from various ministries, from various stakeholders, from the industry participants, from the global bodies, from other regulators in the sector. For example, DGCA has given inputs, TRAI has given inputs, CCI has, everybody has given inputs. So we are taking all those inputs into consideration, and we should be coming up with the final draft as we go. Before the draft telecom bill was released, there was a pre-consultation for which all the submissions by stakeholders were released in the public domain under RTI. That is not being done for the current telecoms. No. Who said this? Yeah, declined. What are the declines? What is RTI in this? I filed an RTI to get the permit. No. You don't have to file RTI. Don't worry, friends. This is Modi ji's government, a very transparent government. That is why even before we published the first draft, we published the consultation paper, right? We published a consultation paper. Basis that consultation paper, we came out with the first draft. Then lots and lots of inputs were received. Basis those inputs, we are doing another draft. Right? That draft, before we go to the parliament, it will all be visible to you. Don't worry. Lawmaking is something which is always done in a very transparent manner. Don't worry about it. Hello. Check. See, Hello, check. the parliament represents the public now, right? Check. And the committees of the parliament, they have a duty to perform. So we are moving in a very concerted, exactly as the way our constitution has laid down the processes. Check. You know, that's related. Yes, that is related to BSNL's indigenous 4G, 5G network. That's why is the delay on the TCS or BSNL? It's not, there is no delay. This is a very complex transaction. It is, obviously it takes such a big leap, takes time. But the process has started yesterday. What I want to share with you is, yesterday the first eNote B, designed in India, made in India, has been installed in Chandigarh. So the digital connectivity to Lakshmi and over the fire,
लक्षद्वीप के लिए कोचिन से लक्षद्वीप अंडर-sea cable of very high capacity is being laid right now. As we speak, it is being laid and it's showing very good progress. By the end of 23, we should be able to provide world-class high-speed bandwidth to Lakshadweep. ना इससे पहले भी डले अंडमान के लिए कैनी नेटवर्क था, ये KLI नेटवर्क है, सो अंडमान के लिए पहला था, इसके अलावा भी पहले भी लग चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो कदम लिया है चाइनीज के बाद ये सवाल उठने लगा कि भारत में कोई खतरा है कि चाइनीज सीसीटीवी लगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे साइबर सिक्योरिटी के जितने भी विंग्स हैं दे आर ऑल वर्किंग ऑन इट एंड वी शुड बी एबल टू काउंटर एनी थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी व्हाटएवर थ्रेट कम्स वी शुड बी एबल टू काउंटर इट। सर मेरा सवाल साइबर सुरक्षा को लेकर हम इस स्टेज पर हैं और आगे हमारी क्या और तैयारी? साइबर सिक्योरिटी में बहुत प्रोग्रेस हुई है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस बहुत सारे हुए हैं जिससे कि आज वी आर एबल टू प्रैक्टिकली as we all know there are millions of threats coming every day, millions of such threats we are able to counter every day और इसमें ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, इसमें काम करते रहना है। Lots of work is happening, lots and lots of work is happening. I cannot share much of that. I will the new ITU original office. बहुत जल्दी मार्च में डेट उसकी फिक्स हो रही है। That is another very big recognition of India's innovative power. ITU area office के साथ ही साथ innovation office is also getting opened in India, which basically means now the world has recognized that India is coming out as a major telecom technology developer, and within next 3 years we should become major telecom technology exporter with our own indigenous India's own telecom stack getting rolled out in the coming months. This will be a major change in the global dynamics. Good manufacturing also is going on very well, friends. 42 companies which were given PLI, 42, no? 42, yeah. 42 companies which were given PLI, they are progressing very well. हम लोगों ने 5 टास्क फोर्सेस बनाई थी so that focused way में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया जा सके। पांचों की पांचों टास्क फोर्सेस की रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है। नेक्स्ट वीक आई विल रिव्यू इट और उसके बाद में फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेना भी चालू करेंगे। 6G में जो टास्क फोर्स बनी थी, जो जिसने कंप्लीट पूरा उसका रोड मैप बनाना था, दैट इज कंप्लीटेड। many technological areas we have identified. कैसे कि भाई इतना बड़ा ये सारा का सारा काम है, इस काम में किस जगह पे हम लोग फोकस करेंगे तो हम बड़ा एक चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एंटायर एंटीना टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू फुल्ली चेंज इन 6G। तो उसमें क्या क्या काम हम लोग अभी से कर सकते हैं, राइट। फिर जो मैसिव माइमो वाला जो होता है, दैट पार्ट वी आर वर्किंग। Then within between the device and the network किस तरह से कम्युनिकेशन में क्या होंगे, वो सब चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से करके 7-8 एरियाज, कितने 9 एरियाज हैं शायद, टेराहर्ट्ज वाली। हाउ मेनी एरियाज? अबाउट 9 10 6 एरियाज, अबाउट 6-7 एरियाज हैं जिसमें फोकस्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक आई थिंक इंडिया हैज वन 17 patents, 18 patents, 20 हो गया। Nearly about 100 patents. 100 patents India has already won in 6G. India has already got about 100 patents in 6G. Remember जब IMC किया था, that time we had done about, India had got about 4 or 5 patents. By now 100 patents India has got in 6G. So this is a journey which is going to be very exciting journey. Already I cannot tell the names at this point of time, but
about 18 countries want to implement it now. By now, our 4G, 5G stack. This is a international, global, some of the best in the world. This is a 4G and 5G stack, upgradable immediately to 5G, right? So this is a 4G, 5G stack. So what we have installed yesterday, that same device will be doing 5G also, right? But always we must go step by step because technology has to be tested, ruggedized, then only we move to the next step. So that's why we are doing 4G first and then moving to 5G. For UPI तो सारी दुनिया लेने के लिए तैयार है. Already Singapore has taken it. किसी का नाम नहीं लेना चाहिए. So what is the update on Indian stacks? Everywhere people are interested. See, population scale पर कोई एक solution निकालना बहुत difficult होता है. It's easy to do at small scale, but at a population scale, billion plus वाला scale जो होता है, billion plus वाला scale पे कोई solution create करना, that is the technology stack that we are offering to the world. G20 में ये बहुत major point है, बहुत major agenda है. Already, so again, people are very happy that this is open technology, this is open source, this is privacy protected. All those things people have tested and checked, and now they want to implement various parts of it. रुचि कम से कम भी होगा तो कम से कम 50-60 देशों ने रुचि. So there are reports about giving around 1 lakh jobs after Apple has actually given 1 lakh jobs. After the scheme, nahi, Apple has actually given 1 lakh jobs. Today morning there was a news item also. See, Make in India जब प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 2015 में, whatever people used to say, पीएम साहब का कन्विक्शन एकदम क्लियर था. पीएम साहब का इस पॉइंट पे फोकस एकदम स्पष्ट था और आज उसके रिजल्ट आप देख रहे हो. 10 साल पहले हिंदुस्तान में जितने मोबाइल फोन्स यूज होते थे उसका 99% इंपोर्ट होता था. आज जितने मोबाइल फोन आप सबके पास है, सब यूज कर रहे हो, 99% मेक इन इंडिया है. ये बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है. ये छोटा चेंज नहीं है, बहुत बड़ा चेंज है. दिस ईयर मोबाइल एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू एक्सीड $10 billion. $10 billion. और अब सारा कंपोनेंट इकोसिस्टम आ गया है. जैसे वॉल्यूम बढ़ा है, कंपोनेंट इकोसिस्टम आ गया है. सो इन द कमिंग इयर्स यू विल सी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों में इट्स गोइंग टू बी लाइक अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. बहुत सारे एक एक करके आता जा रहा है आपके सामने, कंटिन्यूअसली आ रहा है. अभी davos में करीब जितने भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के सीईओज मिले, सब ने क्लियर कमिटमेंट कहा कि हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे. क्लियर 1 to माने A to Z जितने भी मिले सब ने कहा. Also talks around delisting MTNL government was funding. MTNL का ऑलरेडी कैबिनेट में जो अप्रूवल हुआ था, BSNL MTNL. अच्छा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था BSNL MTNL के रिवाइवल का पैकेज, उसका करीब बहुत सारा इंप्लीमेंटेशन हो गया है. बैलेंस शीट ऑफ BSNL हैज नाउ बिकम अ हेल्दी बैलेंस शीट. Operationally, BSNL has come out as a vibrant company now, as a very important, very solid company. और जैसे ये 4G का रोल आउट जो कल स्टार्ट हुआ, 4G 5G वाला रोल आउट, जैसे ये होता है over next 12-18 months, BSNL will come out as a healthy, profitable company beyond this. Sorry,
पूरा जो अवार्ड हम लोग को मिल रहा है तो उस पर बेसिस क्या रहा और कितनी बड़ी चैलेंज के तौर पे देख सकते हैं और इंडस्ट्रीज के तौर पे कुछ सेक्टर्स के तौर पे कितना विन-विन सिचुएशन होगा। इसका बेसिस इस जीएसएमए के ग्लोबल अवार्ड का बेसिस रहा मोदी जी ने जो रिफॉर्म्स किए, प्रधानमंत्री जी ने जो रिफॉर्म्स किए, कंटिन्यूस, एक नहीं कई रिफॉर्म्स की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। दिस इज द बेसिस ऑफ द एंटायर दिस वेरी बिग अवार्ड। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए, भारत के लिए। हाँ, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, किसने कहा था डेवोस में, वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स एक्चुअली सेड दैट इंडिया का टेलीकॉम का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है दैट शुड बिकम द टेम्पलेट फॉर अदर कंट्रीज। ऐसा किसी ने बोला था, मुझे अब याद नहीं आ रहा किसने बोला था, लेकिन ऐसा किसी ने बोला। रेलवे ने, आज रेलवे ने, हाँ, think the bill becomes the hub for 4G and 5G and maybe for all the other technologies in years to come. आप आए इससे पहले हमने बताया था यहाँ पे 6G के 100 पैटेंट्स इंडिया को मिल चुके हैं, राइट? We are working in a very very focused way. I was also sharing before you came that manufacturing में 42 companies का जो PLI मिला था telecom manufacturing का, they are progressing very well. They have, some of them have actually become exporters by now. Some of them have actually become exporters. And जो 5 task forces बनाई थी तब, they have also completed their work. So in a very focused and methodical way, on the one hand, policy, on the second dimension, manufacturing, on the third dimension, 5G rollout, on the fourth dimension, R&D, research and development, सारे के सारे dimensions पे एक साथ push है. So India will become a telecom technology leader and exporter in the coming 2 to 3 years, for sure. बहुत अच्छी प्रोग्रेस है. जस्ट मैंने आपको 14 months से 16 months का टाइम मांगा था. 14 months कल सुबह से चालू होता है. So just wait for some few more days. नमस्ते, कैसे हो? लेट आए? वो सब मेरे को लगा 11:45 कई सारे पॉकेट्स से भी नेटवर्क कनेक्टिविटी सैचुरेशन प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किया था उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है. मैंने, आप समझ लो बाय द एंड ऑफ 23, बाय December 23, practically entire country will have good world class connectivity. It's progressing very well. Problem with the handsets also. They're still not thinking of but देखो, handset का ecosystem as we have seen during the journey from 2G, 3G to 4G, this is a transition phase. अभी मैंने करीब what we understand is कितना, out of the total handsets manufactured, 63 and just only 2 handsets are there. Just 2 handsets are there. Those are recently launched. They will also be and completed. जो अभी shipment हो रहा है उसका percentage Continuous. About 50% handsets which are shipped are 5G. So today almost 40% of the handsets which are manufactured and shipped out, they are already 5G enabled. So this is a let us say 1.5 year period in which this entire transition has to happen. But what is important is this is the fastest transition anywhere in the world. As I shared with all of you before, some senior members came here. आपको senior बोलना पड़ेगा. 5 months. Within such a short period, we had taken first phase as 31st March, and we had planned 200 districts to be covered. We have already covered 387 districts for 5G within February itself. March 31st was the phase 1. I had promised you 200 by March 31st. ये 387 हो गया है by February 28th. And 1 lakh BTSs. 1 lakh BTSs. National forums with Davos be guided. So, sir, do you think how the way they talk about India and the revolution that we are seeing in that point? इंडिया का मैंने last 8.5 years की जो जर्नी है ना,
ये जर्नी सारी दुनिया आज सैल्यूट कर रही है इसको। 1 लाख एम्प्लॉयमेंट दे चुका है एप्पल अभी ऑलरेडी। बिल्कुल मिलेगा, मैं बहुत जल्दी आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। सी, मेक इन इंडिया जब पीएम साहब ने लॉन्च किया था तब लोग बहुत सारे कई तरह के कमेंट्स करते थे। अब देखो फील्ड आफ्टर फील्ड रिजल्ट्स दिख रहे हैं। लाल किले से जब पीएम साहब ने 15 अगस्त को भाषण दिया, उस दिन जो तोपों की सलामी हुई थी वो मेक इन इंडिया तोपे। बहुत मुश्किल होता है ये काम करना, बहुत इजी होता है क्रिटिसाइज करना। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्होंने 60 साल में कुछ नहीं किया था। 60 साल में अगर वो काम करते तो देश कहीं और होता है। ये 8 साल में इतना काम हुआ जितना 60 साल में नहीं हुआ। उनसे पूछो ना, मुझे भी खबर मिलेगी, अच्छा लगेगा। ना अभी ऐसा नहीं है, कुछ डिफॉल्ट नहीं है। देखो कंपनी स्ट्रेस में है, कंपनी नीड्स कैपिटल, और जितना सपोर्ट करके कैपिटल उसको आए उतना अच्छा है। Our support is fully there for getting more capital in there. Very important to get new capital. And by when do you think like this will? उनसे पूछो, उनसे पूछो। देखो बहुत सारी चीजें बाहर नहीं बोलनी होती है। Have a good cup of coffee. We can simply ये बंद कैमरा बंद करके we can just have normal chat. चले, thank you. For your class. Anyone what? Yeah. What?